Okay, students. So in this lecture, we will talk about the nuclear force and stability of nucleus. Okay, nuclear force and stability of. So there are two types of forces which exist inside a nucleus. Nucleus is bound in a very small volume, and there are two types of forces existing inside a nucleus. One is electrostatic force of repulsion between the protons, right? We know that these protons are there, and proton are they are having like same charge or they are like charges. So a proton and a proton, since both are positively charged, they repel each other. They repel each other. There is a force of repulsion. There is a force of repulsion that is FR, the repulsive force. Okay. So the question arises that if all these protons they are repelling each other, then how come the nucleus is stable? जो nucleus है, how is it stable? That is the question. So the answer to this question is that apart from the electrostatic force of repulsion, there is also another force which is a nuclear force of attraction. There is also a nuclear force of attraction. Okay, there is also a nuclear force of attraction, and and it exists. It exists between every nucleon. Every nucleon. That means if it is a neutron-neutron pair, still it will exist. Is a neutron-proton pair, still it will exist. Proton-proton pair. So this nuclear force is there. So this is a relatively weak force, but it is independent of charge. Okay. So it is a relatively weak force. It is a relatively weak force. But what? But it is independent of charge. So this is the most important thing, that it is independent of charge. So let us write down some important facts, okay, because this will help us understand the nuclear force better. So some important facts about the nuclear force. Okay, the first point here is that generally, if you find, right, this is a force which is independent of the charge of particles, right? So the nuclear force is nuclear, Nu. Nuclear force is independent of the charge of particle. That means कितना भी charge हो, कम हो, ज़्यादा हो, charge से कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है? Okay. And nuclear force is a very short range force, ठीक है? That is, it appears between the two particles at a very close separation. If the separation is very close, of the order of 10 raised to minus 15 meter, that is femtometer, then this will exist. Otherwise, it will not exist. So this also is very important, that nuclear force is a short range force. Okay, it is force is a short range force which exists between the particle when the distance between them when the distance between them is very small, of the order of 10 raised to minus 15 meter. Otherwise it will not exist. Okay, otherwise it will not exist. So the concept for stability is that, so this is a very important point, whatever the force is
is being the repulsive force is there between the protons, that repulsive force is trying to break the nucleus. So the nuclear force has to balance all these repulsive forces. So nuclear force which is existing between the neutron and neutron, neutron, proton, 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 that nuclear force has to balance, it has to balance all the, right, all the repulsive forces which is there between the protons, right? So वो होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, न्यूक्लियस स्टेबल होगा. तो कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियस स्टेबल कब होगा. सो फॉर न्यूक्लियस टू बी स्टेबल, और न्यूक्लियस टू बी स्टेबल क्या होना चाहिए, और न्यूक्लियस टू बी स्टेबल, electrostatic forces, electrostatic forces between the protons has to be balanced, has to be balanced by the attractive nuclear force, balanced by the attractive nuclear force. So that's very, very important. Okay. Between the nucleons, which exists between the nucleons. So please note down till this point. So the next point is the effect of nuclear size on its stability. That is the next point. So we'll discuss that. So the next point is, अगर nucleus बड़ा होगा छोटा होगा तो क्या होगा, ठीक है? So effect of nuclear size, effect of nuclear size on its stability. That is what we'll discuss now. So on its stability. देखो बहुत सिंपल है. अगर मान लो अभी आपको ये तो समझ में आया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज नॉट अ शॉर्ट रेंज फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स. मतलब ये हुआ कि दो प्रोटॉन्स अगर पास में है, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगेगा, मान गया मैं, आई एक्सेप्ट दैट. बट अगर दो प्रोटॉन दूर भी है तो भी ये फोर्स तो एक्ट करेगा, थोड़ा कम होगा लेकिन ये फोर्स तो एक्ट करेगा. ठीक है, ठीक है. लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं. न्यूक्लियर फोर्स जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है, जो न्यूक्लियस को संभाले हुए है, न्यूक्लियस को संभाल के रखा है जिसने, वो तो लॉन्ग नहीं है, वो तो शॉर्ट रेंज फोर्स है. ठीक है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे. ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है इट्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स. मतलब जैसे ही ये कॉम्बिनेशन दूर चले जाएगा, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से दूर हो जाएगा, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये नहीं एक्ट करेगा, जीरो हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स. मतलब न्यूक्लियर फोर्स नहीं एक्ट करेगा. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई भी न्यूट्रॉन जो है तो उस न्यूट्रॉन के जो पास वाले न्यूट्रॉन्स हैं या उसके जो पास वाले प्रोटॉन्स हैं, सिर्फ वो ही कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ वो ही कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूक्लियर फोर्स में, बाकी कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते. दूर वाले नहीं कंट्रीब्यूट करते, पास वाले ही करते हैं. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, अगर न्यूक्लियस बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियर फोर्स संभाल नहीं पाएगा. तो बहुत बड़ा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो सकता. बहुत बड़ा न्यूक्लियस जो है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया आपको. तो अगर न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है, इफ द न्यूक्लियस साइज इज वेरी लार्ज, साइज इज लार्ज, तो क्या हो जाएगा, तो आप देखते हो कि जब भी साइज लार्ज होगा या हैवी एटम्स होंगे, उस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, जो छोटे न्यूक्लियस है, छोटे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. दिस इज फॉर स्मॉल न्यूक्लियाई. बट जो लार्ज न्यूक्लियाई है उसको स्टेबल बनाने के लिए उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्योंकि अगर वो नहीं होगा वैसा, अगर वैसा नहीं होगा तो वो स्टेबल कैसे होगा. तो उसको स्टेबल बनाने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो ज्यादा हो, जैसे यूरेनियम आप देखो, यूरेनियम में आप देखोगे तो
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, अराउंड 142 मतलब 146 ऐसा कुछ, तो मतलब ज्यादा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स के नंबर बहुत कम है, सिर्फ 92 है। तो ये आप देख सकते हो कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स will increase with size of nucleus as compared to number of protons with size of nucleus। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक्सीड कर जाएंगे, ताकि न्यूक्लियस स्टेबल हो सके, ताकि न्यूक्लियस क्या हो सके, क्या हो सके, न्यूक्लियस स्टेबल हो सके। ठीक है, तो मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ, पहले आप ये पॉइंट लिख लो। सो लेट अस राइट डाउन दीज पॉइंट्स। तो इसमें आप, तो मैं दो पॉइंट बोल देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या है कि एज द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, इस एज द, आप लोग लिख लो, एज द न्यूक्लियर force is a short range force, it is a short range force, only neighboring neutrons or protons will contribute, only neighboring, B O U R I N G na, only neighboring neutrons and protons will what, will contribute in the nuclear attraction, in the nuclear attraction या फिर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, तो इन द न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, फॉर व्हाट, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसलिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे साइज बढ़ेगा, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी मोर एज कंपेयर टू, सो as the size of the nucleus will, as the size of the nucleus will increase, the number of neutrons, the number of प्रोटॉन नहीं बढ़ सकता, ऑल्दो प्रोटॉन कंट्रीब्यूट्स इन न्यूक्लियर फोर्स, वो नहीं, वो बढ़ गया तो टूट जाएगा न्यूक्लियस, क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स भी तो क्रिएट करता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसलिए न्यूट्रॉन का बढ़ना जरूरी है। सो एज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल इंक्रीज, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल इंक्रीज at a greater rate as compared to, as compared to the number of what, as compared to the number of protons। तो इसलिए जनरली इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेबल न्यूक्लियस, इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेबल न्यूक्लियस, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, इफ साइज इज वेरी लार्ज, इफ साइज इज वेरी लार्ज, इसको हम बोलते हैं हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस जो होता है, उस केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स are greater than what, greater than the number of protons। Okay, so that's the point, so all of you please note it down। So now let us discuss the next point. What is the next point is that, you know, very heavy nucleus are generally unstable, so very heavy nucleus are what, are unstable, okay, so why they are unstable, let us discuss that। Suppose let us consider, you know, this is a nucleus, and let us consider, you know, a proton here. So there are many protons, right, there are many protons, and all these protons are basically, you know, applying this repulsive force on this proton, they are trying to repel it, all of them are trying to repel it, and there is a nuclear force also which is trying to attract it, so there are some nuclear forces which are trying to attract it, okay,
So I have shown the nuclear forces by this black line, attractive forces. So what happens is that this electrostatic force of repulsion and nuclear force of attraction. So sometimes this nuclear force of attraction is not sufficient to counterbalance the repulsive force. So what happens is that this nucleus, it breaks apart. Either it breaks apart or it makes some internal changes so that it can convert into a stable nucleus. And that process is called as radioactivity. You might have heard about it, right? Have you heard about it? Yes, sir. Yeah. So let us write it down. You can also write with me. So in a heavy nuclei, let us write this point because you'll forget otherwise. So what happens is that due to the large size, the balancing of the forces cannot be achieved. And of course, if that cannot be achieved, then you know what will happen. This cannot be achieved. Even if you have even if you have many neutrons, even if you have many neutrons, then but in large nucleus प्रोटॉन भी तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, इसलिए कभी कभी वो मतलब वो अचीव ही नहीं होगा. Just try to understand that, right? Cannot be achieved even if we have extra neutrons due to size. Even if we have extra neutrons here due to the size of the nucleus, it is not possible. So if it is not possible, then what will happen? So this is the most important point because this is radioactivity is a very important part of this chapter, which we'll discuss in detail. So first we should understand why they are radioactive. So such nuclei spontaneously break apart. Spontaneously break apart. Or what they will do? Or they will rearrange their internal structure. Or what they will do? They will rearrange their internal structure. They will rearrange their internal structure. But why will they rearrange? To achieve what? What they want to achieve? Tell me. Stability. Stability. Yes. So to achieve relatively more stable nucleus. Relatively जो है उससे ज़्यादा. Relatively more stable nucleus achieve करने के लिए, they will make some internal changes. The nucleus will undergo some changes, and this phenomenon is called as radioactivity. All right. So this phenomenon is called radioactivity, and they will radiate alpha, beta, and gamma rays. This is called as radioactivity, and this nucleus will radiate alpha, beta, and gamma rays, which we will discuss in detail in future. So let us discuss the last topic for today's lecture, that is nuclear binding energy. Okay, I hope सबने लिख लिया होगा. So we will discuss the last topic for today's lecture, that is what is nuclear binding energy. So let's discuss that. देखो जो एक न्यूक्लियस है, अभी वी नो कि न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, बताओ. Why is the nucleus stable? The nucleus stable because of the strong nuclear forces जो उसको bound करके रखते हैं, right? Because what happens is that because the strong nuclear forces bound all the nucleons. They bound all the nucleons. Nucleons मतलब neutron and proton, right? Neutron and proton ही nucleons है, electron नहीं है. Nucleons in the very small volume of a nucleus. In the very small volume of what? Of a nucleus. Right? Okay.
ओके सो अभी यहाँ पे जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है तो पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम नेगेटिव, राइट, और वी कैन से द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी नेगेटिव, राइट, टोटल एनर्जी. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जैसे आपने ग्रेविटेशन में देखा है अर्थ और सैटेलाइट का टोटल सिस्टम क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव, राइट, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है. सो ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये आपने एटॉमिक फिजिक्स में भी देखा है. अट्रैक्टिव फोर्स है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आता है. तो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, न्यूक्लियर फोर्सेस due to attractive nuclear force, what is going to happen, the total energy of the system is negative, the total energy of the system is negative. Okay, so if you want to break the nucleus you'll have to supply some external force, external energy, and that energy is called as binding energy. So the total energy is negative. Okay, so what is binding energy, the total energy required, you have to give some energy, right? So the total energy required to be supplied, whatever you have to supply, to be supplied to a nucleus to break it apart, to break it apart into its free nucleons or constituents, into its free nucleons or constituents is called what, is called the binding energy. This is called the binding energy. So what will be the equation? Very simple. It will be x a z plus the binding energy to break it into z protons and a minus z neutrons. Okay, a minus z neutrons. So